मेरे नज़दीक वो हैं सक्सेसफुल पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड और हु हैव इंटेंशंस टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स लाइफ, सोसाइटी, प्लेसेस एंड पीपल। जब पहला या दूसरा औरत मार्च हुआ था, आई डोंट नो है कितने साल पहले, तो शुरू शुरू में ना सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी जो कि एज अ वुमन मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती. So I've had majorly my area of practice is litigation. So we do corporate commercial litigation. ये काले कोट की दबदबा भी है और सिग्निफिकेंस भी है, सिंबॉलिक भी है. सो हाउ डू यू एक्चुअली टेक इट दैट वे? हैव यू एवर यूज्ड इट एज She was basically from the rickshaw. She was calling out like, please, 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 रोके रोके रोके, हर किसी को बुला रही थी. Now I have this natural thing कि if I wonder if a woman is in trouble, so मैंने गाड़ी रुकवाई उसी वक्त, and it was like around 8 p.m. किस तरह से हम ना ये चल कैसे है? मतलब हम इतना कुछ 70-75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, अभी तक हम उस लॉ को चला रहे I was a very, very, very shy girl. Very shy. I went to an all-girls school. It's 1940s के हैं. time. And this is a British का ना fan. Yeah. 1940s के actually the act is Arbitration Act 19. तो घोड़े बना के जो गए थे वो उसे बना के गए थे हम उसी पे वामिल हैं. लेकिन What's about your like routine with your friends? आप कब मिलते हो उनसे? क्या टाइम दे पाते हो? No. I'm wearing a coat, so no one's really going to mess with me. अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है और कोई आपके आंखों में आंख देख के या आपसे मुंह से देख के आपसे बात नहीं करेगा, तो आपको if this happened outside of Pakistan, आपको लगेगा ये तो बहुत बदतमीज बनता है, you know. हर एक को equal, बिल्कुल right, equal treatment, that is a law, right. अगर आपकी पहली बीवी का आपने इजाजत नहीं ली, तो is that you being fair with her? Are you treating her equally? तो इसमें देखिए शुरू से लेकर आखिर तक गलत हो खुद अपने साथ कर रही हैं, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर. आई सीम अनअप्रोचेबल, तो लाइक आई एम सिटिंग लाइक दिस. अस्सलाम वालेकुम. वो बातें तेरी के चैनल पे नवीद फारूकी का आदाब. आज मैं आप सबों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी पॉडकास्ट लेकर आया हूँ. एक नए सेट पे एक नया इतिहास क्रिएट कर रहा हूँ. इट्स लाइक अ न्यू जर्नी एट वो बातें तेरी. एज यू ऑल नो दैट वो बातें तेरी चैनल जब हमने बनाया था तो हमारे तस्वीर में भी नहीं था कि वी वुड गो दिस फार. एंड माशाल्लाह से वी आर हियर टुडे विद न्यू पॉडकास्ट सीरीज़ जो कि आप देख सकते हैं हमारे सेट पे, जिसमें हमने बहुत मेहनत की, बहुत लगन से, ना सिर्फ इसकी कंटेंट में बल्कि इसके कॉन्सेप्ट में भी, इसकी टेक्निकल फैसिलिटीज़ में भी, इसकी टीम में भी. मैं हर उस टीम मेंबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि क्रेडिट्स में भी आपको नाम आएगा, लेकिन मैं सीधा बताना चाहूँगा सोफिया आरिफ जिन्होंने हमारा मेकअप, हमारी लेडीज़ का मेकअप और हेयर वगैरह किए, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इसी तरीके से हमारा जो ये सेट है यानी कि फर्नीचर जिस टेबल में हम बैठे हैं, ये पाकिस्तान फर्नीचर वालों ने मुझे बना कर दिया, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इसी तरीके से हमारे जो डीओपी हैं दानिश साहब, उनका शुक्रिया. हमारे जो करते धरते प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ऑडियो गाय, साउंड गाय, म्यूज़िक गाय, एडिटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जितने भी उनकी आप एट्रीब्यूशन की बात करें कम होगी. हम शमीर खान साहब, ऑडियो पे हमारे फ़हद साहब भी हैं, उनके हम साहबजादे मौजूद हैं. इसी तरीके से बैक ऑफ द स्टेज महबूब भाई, खम्मू एंड असगर, दे हैव हैड इन मेकिंग दिस सेट. वो बातें तेरी चैनल पे आज हम एक नए गेस्ट के साथ मौजूद हैं. इसके तारुफ आपको बहुत जल्द कराते हैं. आप उनसे मिलिएगा और आप उनसे मिलिएगा और हम बातें भी करेंगे और आपसे उनका तारुफ भी कराएंगे. इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ जाए, बिफोर वी गो टू आवर गेस्ट, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय को-होस्ट. शी इज़ अ वंडरफुल, ब्यूटीफुल पर्सन, नोया. एंड नोया भी जेन ज़ी से उनका ताल्लुक़ है और उनके यहाँ मौजूदगी इज़ ऑल्सो एलिमेंटल बिकॉज जब ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया था इस पॉडकास्ट का, इससे पहले बहुत अरसे से मैं सोच रहा था पॉडकास्ट स्टार्ट करनी. मैंने इंटरव्यूज़ भी किए, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस पॉडकास्ट, तो दिस कॉन्सेप्ट वाज हाईलाइटेड बाय नोया एंड दैट्स व्हाई शी इज़ ऑल्सो हियर. शी वाज गोना बी हियर एनीवे, बट उन इस नाम की तख्लीक में उनका हाथ है. और जो फिर उसको मैंने रीडिफाइन किया कि किस तरीके से हम इसको ब्रिज करेंगे, लेकिन जेन एक्स टू जेन जी ये नोया का नाम था दिया हुआ. और फिर उसको क्योंकि वो जेन जी से उनका ताल्लुक़ है और मैं शायद जेन जी एक्स में आता हूँ, तो हमारा बेसिकली दो होस्ट
इस तरीके से जेन एक्स वाले और जेन जी वाले लेकर इसको आगे चलेंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और उसमें ब्रिजिंग द गैप बिटवीन जेन एक्स जेन जी। तो मैं आपकी उनसे मुलाकात कराऊंगा। पहले सबसे पहले इंट्रोड्यूस तो हो गया, और आप मिलिए हमारी को होस्ट नोया शाह से। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नोया शाह, जिनके बारे में इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त सा इंट्रो दिया, और मैं यहाँ आज मौजूद हूँ। मुझे यकीन भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये 2 साल पहले कही हुई एक हवाई बात थी कि यार पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, और मुझे नहीं पता था मैं उसी में को होस्ट बन जाऊंगी, और हम लोग ऐसे रैंडमली बैठे हुए होंगे और मुझसे 2-3 लोग आके पूछेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या है, तो मैं कहूँगी जेन एक्स टू जेन जी। लोगों ने फिर मुझसे पूछा ये क्या है, तो हम लोग लाइक इट्स रियली गुड टू बी हियर, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी इंसान हूँ जो सीखने का अमल जो है, जिसका हर वक्त जारी रहता है, जो कि सीखने की बहुत ज़्यादा शौकीन भी है, और जिसे उर्दू अपनी सही करनी है ख़ास तौर पे। तो मेरी जब से मुलाकात हुई है, तो नवीद साहब ने हमेशा ही मेरी उर्दू की टांग खींची है। नहीं, बट उर्दू की ना सिर्फ टांग खींचने का सवाल नहीं है। इवन इफ यू टॉक अबाउट इन इंग्लिश और इन जस्ट एथिक्स और द any element of life, I feel that it's no harm in learning. We're all Exactly. I'm unlearning right now. I mean, I've been unlearning from my kids. तो कोई इसमें कबाहत नहीं होनी चाहिए कि उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, किसी ने भी आप कर लें। On that note, I would like to tell you guys that आपको यकीन नहीं आएगा, ये नोया माशाल्लाह से she's so talented, she's so well spoken. She's only 23 years. Yeah, I just turned 23 in June. जी 23 साल की है, और ये माशाल्लाह से she has a long way to go. So and then again the reason she's being here is because of the representing Gen Z. So Noya, please go ahead. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं आज और भी खुशी की बात ये है कि जो हमारे मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो भी जेन जी ही हैं, और जिन्होंने अपनी लाइफ में मेरे ख्याल से बहुत कुछ अचीव किया होगा। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट नंबर्स कि आपकी क्या एज है क्या नहीं है। बहुत ऐसा होता है, शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने अपनी एज से ज़्यादा सीख लिया है, तो मैं आज उनसे सीखना चाहूँगी जिनको आज मौजूद हैं आमना हमारे साथ, प्लीज़। Assalamu alaikum, मेरा नाम आमना खाकान है, और I'm very honored to be here as a guest on the podcast. When you had reached out to me regarding the podcast, I was really honored because personally, I love listening to podcasts, so I've always wanted to have this sort of a format, Yeah. and I consider myself a very socially aware and vocal person, so yeah, just mic की बस ज़रूरत थी. That's great, and I'm so happy, and I must say that before we go to Amna's किसे बातचीत हम start करें या इनकी introduction पे मज़ीद जाएं, कि Amna was so forthcoming. नोया, मुझे इतना खुशी महसूस हुई जब मैंने एक मैसेज किया इनको, and a positive response came from, and like other people that I've been approaching, not Gen Z, but she was our first, she is our first guest from Gen Z, Z generation. तो इनका रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव था, और मुझे आई फेल्ट ग्रेट। और उस वक्त मैंने इनको सेट की, और इसकी किसी चीज़ की नहीं थी, वो जो मेरा राइट है वही भेजा था, एंड शी वाज एक्साइटेड। She was excited, like I am. Yeah, Like sitting with the mic and I can speak my heart out, और मुझे पता है कि यार माइक वाइक का इनको कुछ नहीं पता। हाँ, you mentioned ना कि podcast है। पॉडकास्ट was Yeah. so लेकिन she was very positive and welcoming. So I was excited, and then she's here, and even today when I sent her the set that we were working on, कि जी ये हमारा set है, ये हमारी location है, इस तरह से हम कर रहे हैं, and I was excited. So she said I'm excited too, and I felt great too. So this is something that I felt very happy about, and बहुत खुशी हुई आमना ये सुन करके आप podcast वगैरह सुनती हैं, और इस तरह से आप हमें और भी बताइएगा as we go on कि कौन सी podcast सुनती है और क्या होता है। प्लीज अपने बारे में अपना तारुफ करें। अपना तारुफ करवाएं कि आप हैं क्या। Well, first and foremost, I'm a human being, but majorly, currently I'm working as a lawyer at a law firm, and I've been working for the past 2 years. So I've had majorly my area of practice is litigation. So we do corporate commercial litigation, and so litigation basically
means that कोर्ट कचहरी का मेरा चक्कर काफ़ी होता रहता है, be it high court, be it city court, be it tribunal level. आप वहीं से आ रहे हैं, I guess. Yes, it's And I look at her attire, and it's so impressive, mashallah. She was telling us that she wear this black jacket, the black coat, और black जो हम बात कर रहे थे काले कोट की, तो ये काले कोट की दबदबा भी है और significance भी है, symbolic भी है. So how do you actually take it that way? Have you ever, used it as, like if you're wearing an army uniform or a police uniform or any other uniform? So please tell us. I mean, I'm not going to lie. I do feel a bit more confident. So if I'm going to perhaps a bank, yeah. Once what happened was this lady. She was in a rickshaw with the young daughter. So we were just passing by Muhafiz ki main road pe only. So our car was passing by, and she was basically from the rickshaw. She was calling out like, please, 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 roke, har kisi ko bula rahi thi. Now I have this natural thing ke if I wonder if a woman's in trouble, so maine gaadi rukwai usi wala, and it was like around 8 p.m. So ordinarily one would think that's not the smartest thing to do, to stop your car and get off, but I exalted this thing ke I'm wearing a coat, so no one's really going to mess with me. You have this thing कि अच्छा कोई अगर कोई बेवकूफ़ बनाने की भी नहीं कोशिश करेगा. What happened was बेचारी, she was coming from North Bazambas. She had a kitten जिसका कोई accident हो गया था, so she was looking for a vet. Yeah, so actually उनका phone dead हो गया था, तो she couldn't guide in the rickshaw वाले, उसको नहीं पता था vet कहाँ था, so I took it out of my Google Maps and she just followed me with the rickshaw. But there's this sort of you have this confidence when you go anywhere. You have this identity that people can recognize you with your identity. So it speaks before you speak. Wonderful. And then so you take it in a positive way and constructive way rather, कि जी किसी के भला हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए. But नहीं वैसे घर में या दोस्तों में, do you get like that? Oh no, I try not to wear it. But Yeah. It just must have poured out of you, right? I mean, it's sort of like, when you go to like a mall and you see like med students going around in their lab coats and Yeah, with that, I want to ask कि अब देखिए, आपको पता है कि आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. right. लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं दूर से. Right. तो आई हैव सीन इट कि जिस तरह कोई अगर लॉयर है तो वो they are stick to their profession. ठीक है, ऐसा ही है. I wanna ask to you, क्या सिर्फ आप अपने profession से stick हैं, or you are doing civil work, और आपको पता है that I am that confident and powerful that I can do something for other people, because that what I wanna ask you. Yes, this happens quite frequently. So it's very common to have like someone approach you कि अच्छा आप वकील हैं. So even for example, if I'm going to the restroom, public restroom, और वहाँ पे जो सफाई वाली होती है वो मुझसे पूछ रही होती है कि अच्छा ये हमारा थोड़ा मसला हो रहा है, ये हम इसका क्या करें. So you have, I think, it really helps because people come to you for help and you know that you're in a position to help them. Exactly. आपने अपना इस बारे में बताइए कि आप why you became the lawyer and उससे पहले about your life. So As a kid. As a kid, perhaps I'll start off with my decision to choose law. Okay. Actually, what happened was that I was a very, very, very shy girl. Very shy. Went to an all-girls school. मेरा मुंह ही नहीं खुला जाता था किसी के सामने. It was around grade 9 that I participated in my first MUN, Model United Nations. So the simulation that we were a part of was the Nuremberg trials. Now, if anyone knows about the Nuremberg trials, it was the trials, first international law trials that happened when to basically prosecute the Nazi regime soldiers, right? So we were actually playing out the Nuremberg trials. So we were actually appointed. So I was at the time Albert Speer, who was one of the famous architects of the Nazi regime. Was that here? Yeah, it was here. It was a local MUN. Okay. And I took part in it. And it was my first ever public speaking platform whatsoever. And we each had to give our own starting statement. So when I gave my starting statement, my legs were shaking. I couldn't speak, but Yeah, I do that. And you were in A levels, right? yeah, no, I was in grade 9. Grade 9. Class 9, Okay. yeah. I was young. Okay. And
I was perhaps the only person who was not given the same sentence that every Nazi soldier got. I didn't consider it a personal victory because at the end of the day, it's a Nazi soldier, but it really gave me that push. So uske baad I think I did 3 more MUNs. Then I did public speaking, I did debates as well. So it really fueled. And वो भी होता है ना कि जब बच्चे थोड़े पढ़े बाज होते हैं तो कहते हैं कि अच्छा ये तो वकील बनना चाहिए. If you're very persuasive, कहते हैं कि वकील बन बड़ी होके वकील बनो. That is kind of the thing you hear growing up. So when it became time that अच्छा university जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, what do you want to do with your life? I also had I personally felt that I had a business acumen. So I always consider I was like either business, yeah, law, yeah, my arts, because I'm very into fine arts. Acha, I can relate to that. So I thought about it and I said, you know what? I can be in business without a business degree. I can do arts without an arts degree, but to be a lawyer, I need a law degree. So that's why I thought, that's why I thought I should just go into law first because it was a specialist degree. So that's why I decided to pursue it. And mashallah said, I think I did well at it. So, being a lawyer, what challenges were there even before becoming a lawyer, studying it? Before becoming a lawyer, and I think this is something that you will hear from every law student. It is. Did you bleed from your eyes? Was it tough? It was. That's what I meant. Okay. It was very tough. There used to be a term when we were studying. I studied chemical engineering, so the normal term थी America में also. Did you bleed? So as in. Okay, you bleed when you don't sleep, when you bleed from your eye, and yes, we used to bleed. Yes. So how tough was it? It was incredibly tough. Yeah. It's not. How many, I would say, all-nighters or nighters would you put in? When I had my final year exams, मेरे घर में मैंने rule बनाया था कि इतना बड़ा kettle होगा with गर्म पानी and coffee, instant coffee का होगा. So I would just constantly have it on rotation. The dedication, obviously. I know, we used to have pills. Ritalin. Maverick. Okay. And these are the caffeine pills. मुफ्त आती थी. Red Bull वगैरह नहीं. Right. So we would take those. And that one pill had like 6 months of coffee. Okay. That would keep you up. Okay, I thought you were talking about, Ritalin and Adderall, the ADD medication. Many people take that for studies. ये तो अभी आई है उस वक्त नहीं. मुझे बिल्कुल नहीं पता इन चीज़ों के बारे में. But so बहुत ज़्यादा all-nighters लगे फिर आपके. I can't even count. It's so many that I don't even know where to count. And it's not just from my. Did you love it or would you ever get frustrated about it? It was very frustrating. क्या बकवास है कि I wasn't able to go out, I wasn't able to match up with my friends. Did you feel that? Yes, especially because I actually was a student during COVID. So that was very, very difficult. Okay. It was very difficult. वो आपको वैसे satisfaction होती है क्योंकि वैसे भी कोई बाहर नहीं जा रहा. No, actually, I realized I always thought that I was a bit of a loner. But after COVID, जब forcefully lonely बनना पड़ा, so then you realize, I was like, okay, human beings are social creatures. I understand that now. Exactly. So I want to ask कि इस profession के साथ और अपनी ज़िंदगी के साथ इस पूरे सफर को साथ लेकर आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? Well, I am now looking to pivot from the law career. So I'm not going to be pursuing very traditional legal roles in the future because now I feel like the way that the world is evolving, the way that the world is moving, it's also better to sort of shed the more traditional roles, right, and adapt. So I am looking into joining perhaps more tech side, fintech side, and also the law or even just business development front. So business development में law भी बहुत आता है. So what do you think about Pakistan की current situation? Do you think with that? It's pretty negative. Yeah, it's like she said no comments. So yeah, Okay. यही चाहिए ना, the no comments because we can't say anything. Yeah. Okay. So
On that note, I would like to say ask you about your publications. When was that, and how? What did you write? Tell us about that, and where it got published. So when I was a law student, so I actually studied from Zabist. Zabist did not have a law journal, so this is a very common thing where you have law journals which has legal publications. So when we Zabist didn't have a law journal. So me and my friends, we were one of those initiative taking students, so we were part of our society, our presidential society. I was in charge of mooting, my friend was in charge of communications, publications. So we actually launched the law journal in our time. So we were actually the students who kind of pushed for the law journal to come about. So when I was in my third year, I was actually the editor-in-chief of the law journal as well. Wow. Because we were the ones who basically started it, right? Okay. So because of that, my love for academic work in publications really started springing, because Pakistan mein there's a huge vacuum of legal academic work. So we wanted to make something that was very approachable for students. Exactly. So what we would do is we would get some students who were interested, we would get some lawyers, and we would pair them up, and we'd be like, have a publication. So ऐसे per student का भी publication होता था, और lawyer का भी had someone who would do the work because they would be too busy to do it. So this is the platform that we created. So after that, what happened was that there's this legal journal that came out, and they reached out to someone at our firm, and they wanted us to work on. So because we work in dispute resolution, litigation is dispute resolution, and there's a subcategory of dispute resolution called arbitration, which is a more formal form of dispute resolution. So our arbitration law is very archaic. It's 1940s. And this is a British guy, right? Yeah. 1940s. Actually, the act is Arbitration Act 1940. तो गोले बना के जो गए थे वो उसे बना के गए थे, हम उसी पे वामिल हैं। लेकिन किस तरह से ना ये चाहे कैसे है, मतलब हम इतना कुछ 70-75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, अभी तक हम उस लॉ को चला रहे हैं. So what happens normally is, just for example, you would have the main act, that will be going on. So, but we'll have like subsequent amendments. So amendment acts आएंगी, जैसे 2006 में आई थी, 2010 में आई थी. So what these amendment acts do is they amend the main law. So you'll have the main law as it is, and then there'll be perhaps just, for example, उन्होंने section 3 को remove करके कोई और new section डाला होगा. So you'll have it in brackets with a footnote saying inserted by Amendment Act 2010. So this is how they try to update the laws. Okay. Yeah, this is how they try to update. That is why over here, जो बाहर इंग्लैंड के पढ़े होते हैं बाहर, वो लोग आकर यहाँ बड़ा अच्छा सेटल हो जाते हैं. What about the people who study law in America? So the thing with America is that actually American system is a bit different. So America may, because it's a civil law system, we actually follow common law jurisdiction, which is almost every country that जिसमें जहाँ पे भी ब्रिटिश का राज चलता था, वहाँ पे they all work the common law system. America में there's a civil law system. So law in America is actually postgraduate qualification. So for example, it's like how they have medicine as a postgraduate qualification, they have law as well. So you have to do a Juris Doctorate, which is I think a 3 to 4 year program. So it's after you do your bachelor's, technically, like you do your undergraduate, then you do your postgraduate, which is then a GD, which is actually the law degree. That's so. You would say that any lawyer, if they were coming from America, which is actually not that common, because nobody comes back here. It's rare for anyone कि अगर मुझे पता है कि मैंने यहाँ वापस पाकिस्तान ही आना है, तो मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं अमेरिका ना जाऊँ. मैं वहाँ जब common law. If I'm not asked you, कोई है? Do you know any lawyer significant जो नाम सुनते हैं जो अमेरिका का पढ़ा हुआ, जैसे बड़े-बड़े lawyers हैं, या इस टाइप का कोई है? I mean, the most senior lawyer at our firm, he's actually studied from George Washington University, and he also gave his bar exam, and then he came board. Okay. So, but he's also very strictly corporate. Okay. He's also very strictly corporate. So that's also, वहाँ पे people have subdivisions पर होती रहती है. You get what I'm saying? Wow. You know everything about your field, your dedication, your profession, explanation. Like, she's really good at it. So I can like imagine seeing her in the court. Yeah, debating. So do you fight in the court? I mean, do you see yourself as in fighting a case, obviously? But एक तो था ना लिखने की हद तक document बना दिया. But I'm not sure if you have done that. Or would you do you see yourself actually fighting or contesting? Honestly, if you asked me this 2 years ago, I would have said yes.
Not anymore. Maybe because I've had one or two experiences where I've had to perhaps just hold brief or thoda sa fill in for like a senior or colleague. उसमें मेरा थोड़ा से bad experiences थे and When you say bad experience, by bad experiences, you have to understand that this is Pakistan and you're a woman. Exactly. And you have to understand that कोर्ट में भी ये होता है? कोर्ट में almost हर जगह होता है. I know. I thought it कोर्ट में ऐसी जगह शायद ना होता हो. No, it's शायद कई जगहों पे बहुत obvious नहीं होगा, but for example अगर हमारे पास कोई client आए या someone meets us or even if you're in the high court or in the courts, तो मेरे colleague को बोलेंगे अच्छा okay sir thank you very much, बोलेंगे okay बेटा करके चले जाएंगे, although we'll be the same age. And this happens, I've seen it myself, where even if I'm at high court, so we're waiting for a case. So usually because I'm still very junior, I assist my seniors. But when I am in the courts, I've seen senior female lawyers speak and address the judges. And it is very easy for another lawyer to be very dismissive of what the female lawyer is arguing, or the judge to not really Exactly. It's very difficult for a man to understand, because as a woman you get so accustomed कि आप दूसरे को कैसे treat कर रहे हैं और आपको कैसे treat कर रहे हैं, और ये and my main issue is that अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है और कोई आपके आंखों में आंख देख के या आपसे मुंह से देख के आपसे बात नहीं करेगा, तो आपको if this happened outside of Pakistan आपको लगेगा ये तो बहुत बदतमीज बनता है, ये तो तमीज नहीं कर रहा, not respecting me. Exactly. यहाँ पे you have to give them the benefit of doubt कि अच्छा शायद वो थोड़े modest हैं, maybe he's a bit religious, तो औरत है तो वो थोड़ा लिहाज कर रहा है. You have to give them those benefit of doubts. Like for example, we had some foreigners that came to our office. They came in, and usually when some Pakistani person comes, so सबका handshakes हो रहे हैं और मैं बस हाथ पीछे करके खड़ी होके सामने कम करके that's it. But when the That is why I invited this adab. That's the best thing. Exactly. Because I tell the ladies and family में भी otherwise कि कभी भी आप कहीं जाएं और आपको awkward feel ना हो, तो आप बेस्ट है. और हमारे कल्चर का, हमारे रिलीजन में मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन खूबसूरत कोई चीज़ नहीं हो सकती. और वो ये है कि आप जाएं तो लोग अगर एक्सपेक्ट करते हैं औरत का या बच्ची का हाथ मिलाना, तो आप आदाब कर दें इस तरीके से. दिस इज सच a beautiful way of saying अच्छा, respect too. because I've been through that. मैं जब भी किसी सोशल गैदरिंग में जा रही हूँ जहाँ पे मुझे नहीं पसंद हाथ मिलाना, मतलब पर्सनली मुझे नहीं पसंद, because if you are close to me और like मेरी आपसे कोई बहुत अरसे से मैं आपको जान पहचान लगती हूँ, तो मैं हाँ हैंडशेक्स कर लूँगी और give a like slightly hug. तो I do that adab thing like since so long, since my school. Yeah. बट तुम्हारा आदाब वो बातें तेरी पे भी. बट मैं यही बता रही हूँ कि वो बातें तेरी पे भी आके, और मैं बड़ी खुश हुई थी जब आपने मुझे बताया था शुरू में आदाब करना है. एंड देन वी हैड आवर गेस्ट अभी लास्ट वीक, तो उनको ही मैंने कहा दिस इज आवर रिचुअल, यू हैव टू डू आदाब. कोई कर रहा है यार, हमने ये बड़ा प्यारा किया. सो आई एम हैप्पी विद दैट एंड दिस इज एक्साइटिंग. सो आमना, जो अभी आप बात कर रही थी उसकी वो जो एग्जांपल आप दे रही थी जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया, डिसीजन लिया इतना बड़ा कि यार नहीं, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वांट टू परस्यू. सो व्हाट वाज दैट जो एक टर्निंग पॉइंट था? I wouldn't say there was many turning Okay. points. I would say that generally when I was even starting my practice, I'm very vocal, and I'm a huge advocate for human rights, social rights, women's rights especially. So I actually took part in Aurat March. Good that you mentioned. Yeah. This is something that I wanted to ask you. So, okay, this Aurat March thing, Amna, and this female rights, I feel, and I am also of the opinion जी औरत को respect देनी चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मर्द से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए. मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में है भी, जो दुनिया में कहीं नहीं है. एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो कम से कम मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ. अगर आप बस में सफ़र कर रहे हो या कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपके पास बैठने की जगह नहीं होती, तो आदमी देखा है मैंने, औरतों को जगह दे देते हैं बैठने के लिए. एग्जैक्टली. ठीक है. इसी तरीके से अगर कोई लाइन है, कोई बड़ी खातून आ गई है या ज़ईफ आदमी भी आ गए, तो आदमी लोग उनको दे देते हैं, ऐसा नहीं है. अच्छा, और क्या, हाँ, घरों में माओं को इज्जत मिलती है, बहनों को इज्जत मिलती है. अब ये मैं उस पर नहीं जाऊंगा बीवियों को मिलती नहीं मिलती, बट
जनरली मिलती है, बच्चियों को मिलती है। शायद गाँवों में या देहातों में नहीं मिलती होगी, लेकिन जनरली जो हम जिस माशरे से, जिस स्टार्टर से हैं, वहाँ पर हम देते हैं, अनलाइक अदर कंट्रीज़। मेरा सवाल ये है कि क्या जो वुमेन राइट वाली सिचुएशन या मी टू मूवमेंट जो हमारे आई, वो कुछ हद तक उसको मिसयूज़ नहीं किया गया? What, if I may ask, what do you mean by misuse per se? मिसयूज़ इसको थोड़ा कुछ लोगों ने, आदमियों ने भी और औरतों ने भी टू एंड फ्रो जो फॉर एंड अगेंस्ट वाली बात में ले गए उसको, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। ज़रूरत ही नहीं थी। हम सब जब एग्री करते हैं कि औरत के राइट्स होने चाहिए और अच्छे राइट्स होने चाहिए, जो उसकी ड्यू राइट्स हैं, जो हमारा कल्चर, हमारा मज़हब कहता है उस मुताबिक, सो अननेसेसरीली इसको वो करना क्या ज़रूरत थी? I mean, I think that's, आपने खुद कहा कि आप लोग सब अग्री करते हैं, राइट? लेकिन अग्री करना इज वन थिंग एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इज अनदर Okay. थिंग, राइट? जैसे अगर कल को अगर मुझे नादरा जाके अपना CNIC रीइश्यू करवाना हो समथिंग, आई वुड नीड कॉन्फर्मेशन ऑफ माई फादर्स. We've had many cases. बट यू नो नादरा पे अगर मैं जाऊँगा तो मुझे तो मैं अभी रिसेंटली एग्जांपल दे रहा हूँ, नादरा में मैं गया, उन्होंने कहा जी किसी 18th ग्रेड के ऑफिसर से वेरीफाई करा के लाइए। वो तो that's generally actually that's called notarization. Okay. वो तो वेरिफिकेशन की होगी है, Okay. वो तो हर किसी ने करना Okay. होगा, लेकिन ये बहुत दफा होता अच्छा, आपके फादर का उन्होंने कहा तो वो आपको बुरा लगा? है, मुझे नहीं कहा ऐसे ये होता है, ओके, ये होता है, तो यू थिंक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए बिकॉज जैसे इसका मदर का होना चाहिए? नहीं, जनरली अगर अगर मैं एक इंसान हूँ 18+ हूँ और मैं नादर के पास जा रही हूँ और मैं CNIC रीइश्यू या कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज या कोई भी डॉक्यूमेंट मांग रही हूँ, सो व्हाई डू यू नीड ऑथराइजेशन? अच्छा, इन दैट केस अच्छा आज हस्बैंड. अच्छा फादर का है, फिर बाद में हस्बैंड का आ जाएगा। ओके, अच्छा, इस पे Yes. मैं कहूँगी, जब मैं अपना फास्ट फूड बना रही थी, तो मतलब आई वाज वेरी वर्ried कि यार मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, हाँ. बिकॉज मेरे पेरेंट्स जो होते हैं KPK में होते हैं। सो आई वाज लाइक कॉलिंग देम, आ जाओ, ये कुछ भी कर लो, मुझे पासपोर्ट ऑब्वियसली चाहिए, मैंने बनवाना है। सो मैं जस्ट गई पासपोर्ट ऑफिस और मैंने उनको ये रीज़न दिया, उन्होंने कहा इट्स ओके, या दे हेल्प मी। या इन दैट केस मेरा तो ये रहा है, NIC तक ये सब चीज़ें तो मेरे अब्बू ने खुद करवाई हैं, बिकॉज मतलब 1 महीना था मेरा 18 होने में, एंड देन उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा लेता हूँ। अब लेकिन ये जो बात करी है ना, वो ये बात करी है कि एक जो लॉ है, जो एक सिस्टम है, या आई नो, इसको इसकी नहीं होना चाहिए। गो अहेड। ऑल्सो इफ आई मे दीज देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ अगर आपके पास बहुत हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप है, आपके हेल्दी एनवायरनमेंट है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। never be an issue. But this happens with women के जब husband abusive है, he's violent and they want to get away and उनको भागना होगा या दूर होना होगा, बच्चे को बचाना होगा, so they are very limited. They are very limited. अगर उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाना होगा, उन्होंने अपना नादर रीइश्यू करवाना होगा, they have to change their status from unmarried, तो husband को मैसेज आता है कि आपकी बीवी is trying to basically change your information and stuff. So this becomes exploitative tactics that is then abused. So the issue is not for the fact कि देखें, you know, things happen, things are fine, you know, हमारे साथ ठीक होता है. It's actually the fact is कि these systems and these checks and balances, these obstacles, if they fall into the wrong hands of people who exploit and abuse women, then they can use it against them. औरत पे फंस जाती है ऐसे. I agree. Yeah. इस एक्सटेंट तक तो I absolutely agree. बट एक और चीज़, सॉरी रोया, मैं एक और चीज़ इसमें पूछना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ तक तो बात ठीक है, हाँ. लेकिन जब हमने देखा हमारे यहाँ इतनी अब्यूसिव लोगों के में अंदर हो गए, डिवाइड हो गया औरत और मर्द के दरमियान खामखाई का, जिसमें हम जैसे लोग भी सफ़र किए, सफ़र इस सेंस में किया कि आई बीइंग अ मैन, तो हम मुझे ये लगा कि यार ये क्या हो रहा है, सो आई फेल्ट बैड, होना नहीं चाहिए। एंड देन सम women came up with very strange slogans कि जी तुम्हारा खाना क्यों गरम करूं, या बिस्तर क्यों गरम करूं, या मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो I thought that was unnecessary and You know, the thing is, or maybe out of context. no, that's the thing. People usually just go on the slogan कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये क्या बात हुई, you know? Explain it to us. Okay, मेरा जिस्म मेरी मर्जी talks about body autonomy. Okay.
having the right to your own body. So, for example, currently marital rape is a very big debated topic because marital rape is not accepted. It's not particularly a law. agree. There's a lot of jurisprudence that says कि आप nikahnaमा sign करेंगे, so that is implied consent you're giving to your husband to basically rape you technically. So because the thing is, the issue with rape is that rape ensues that there is no consent, right? What marital rape, the reason is so convoluted is the fact is कि वो कहते हैं कि अगर आपने निकाहनामा साइन कर लिया, आपने शादी कर ली, तो आपने अपना कंसेंट दे दिया हुआ है, अब हस्बैंड को मांगने की जरूरत नहीं है. Now the issue is that, I mean, in practice, it's not right. It's not right. I'm getting your point. क्योंकि देखो These are the things. हर चीज को अगर आप ट्विस्ट करोगे तो वो बुरा मैं अभी आज से 1 हफ्ते पहले एक वीडियो देखी. आई वाज स्क्रॉलिंग, तो जिस तरह मैंने बात करी, हम कोर्ट की बात कर रहे थे, ऐसे ही देहात में जिरगे होते हैं, पंचायत होती है, एटसेट्रा. तो मैं अफगानिस्तान की वीडियो देख रही थी जिसमें बाकायदा, अच्छा उनको तो एजुकेशन का कुछ पता भी नहीं होगा, बट उन्होंने वो लेकर गए जिरगे में, ये बात लेकर गए कि वो उसके भाई की डेथ, सॉरी बेटा, एक पहले बेटे की डेथ हो गई है, तो जो छोटा बेटा है वो अपनी भाभी से एक शादी करना चाहता है, और वो कोर्ट में अपने बाप को साथ लेकर आई और वहाँ पहुँची कि मैं नहीं करना चाहती. तो मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आई थिंक कि शादी से पहले हमारे इस्लाम में ये बात है, बाप को बोला गया है कि अपनी बेटी से पूछो, अपनी बेटी से पूछो. तो जब बेटी ने हाँ की है और उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद मसले मसाइल बढ़ रहे, तो क्यों औरतें ये बातें छुपा के बैठी रहती हैं, कुड़ जाती हैं, मर जाती हैं, और बच्चे पैदा हो जाते हैं तो कहती हैं बच्चे पैदा हो गए उनके लिए सफ़र करेंगे. तो इस चीज़ में देखिए शुरू से लेकर आखिर तक गलत वो खुद अपने साथ कर रही हैं, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर. ये चीज़ पहुंचाने के लिए क्या मैं एक प्ले कार्ड लेकर वहाँ भेजूँगी जहाँ सबको पता है ये बात, क्या मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ किसी को ये बात पता नहीं है? तो this is, I feel, sort of, लोग कहते हैं, so this is also sort of an extension of this philosophy called intersectional feminism. So intersectional feminism plays with the role that I don't know about it. So a lot of people say, I don't know either. जो more common mainstream feminism आप देखते हैं is actually white women feminism. So white women feminism is the fact that as a white person you're already granted many privileges. You're one of right? them? No, that's very mainstream. Personally, I believe in intersectional feminism because the thing is, intersectional feminism does not look at privilege. It looks at extensive. So, for example, कि it's very easy कि अगर मैं मार्च में जाऊँ और मैं टी-शर्ट पहन रही हूँ कि पराठा रोल्स, not gender roles, लेकिन generally like मैं टी-शर्ट्स बनी हुई होती है, like during like women's month, like ऐसे होता है, like टी-शर्ट्स निकली हुई होती हैं, लेकिन ये सोचते नहीं है कि जो ये जौन सी फैक्ट्री, जो साइड पे जो फैक्ट्री होगी, वहाँ पे जो औरत ये शर्ट बना रही होगी, उसको क्या मिल रहा होगा उस शर्ट के लिए? 2 रुपए 5 रुपए. Exactly. So intersectional feminism believes कि आपका जो root cause, जो root evolvement, जो whatever you should consider should start with every woman before it starts nitpicking to the women who are already in power roles. So again, going to the placard bit now, the thing with Aurat marches, I feel that it's very convoluted now because perception ऐसी बनी हुई है कि it's just women going to prayer hall and holding placards, right? I mean, hypothetically, That's what we get. Yeah, exactly. मीडिया पे यही दिखा, मीडिया पे यही दिखा रहा है. That is very important. मीडिया पे दिखाया ये जाता है. As someone who's been there will be communities. There will be the fishermen women communities. There will be the Christian community ladies. There will be the Hindu community ladies. They will all be there. How do we know all that? Because media does not see that जब पहला या दूसरा औरत मार्च हुआ था, I don't know कितने साल पहले, तो शुरू में ना सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी जो कि एज ए वुमन मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती. उसके 2 साल बाद उन्होंने कहा कि औरत मार्च में ये प्ले कार्ड, राइट, कि वो दिखाए गए थे वहाँ पे, जो कि उस टाइम पे मौजूद नहीं थे और नहीं दिखाए. तो 2 साल बाद वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ना, आई वाज लाइक ये तो सही वाला है, ये तो फैक्ट्स बता रहे हैं और पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, तो ये तो सही वाले हैं, ये वाले क्यों नहीं दिखाए गए? Because this is the issue, right? For example, आप कहीं डिनर पे गए हुए हैं, right? बफे लगा हुआ है, and बफे में से सारा का सारा there's this huge chocolate fountain and it's a grand
chocolate fountain. तस्वीर आप सिर्फ उस chocolate fountain की लगाएंगे. You won't take pictures of the other food. Exactly. Won't, because you'll know that this chocolate fountain is something that others want to see, you know? This is okay. I agree. But see, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, as I remember my mother when we were kids, जब हम सबको खाना पहले मिलता था, सब खाना खा लेते थे और कभी उसमें जो बचता था वो हमारी अम्मी खाती थी. तो मुझे बताओ कि जब ये हमारी अम्मी ने एक रिवायत कायम की, बीइंग अ वुमन, और फिर इसी तरीके से जब मेरी बहनें बड़ी हुई तो वो भी ये करना शुरू कर दिया, अपने बच्चों और मियाँ को पहले खिला रही है, खुद बाद में खाए. तो दिस इज द ट्रेंड व्हिच और समथिंग व्हिच इज सेट बाय अ वुमन. Yeah, but the thing is, so this is a clear example of actually internalized misogyny. And I'm sorry to be, and let me add one more thing. Yeah. इसमें my नानी वो तो और ज्यादा एक आती कि जो बोटियां होती थी सिर्फ बॉयज को मिलेंगी, लड़कियों को नहीं मिलेंगी. Yeah. What? That's again, this is perpetuating gender roles. Like gender roles का ये कि औरत ने किचन में जाना चाहिए and then मर्द को डिनर टेबल पे होना चाहिए, right? And it is wrong. Exactly. मैं कह रहा हूँ ये सेट औरत तो कर रही है. औरत कर रही है, yes, but it's also the fact is that at the end of the day आप power structure भी देखें ना. पावर स्ट्रक्चर क्या है? पावर स्ट्रक्चर ऐसे सेट हुआ है कि जी मर्द आ रहा है, मैं काम करके आ रहा हूँ, मुझे खाना बना के दो, राइट? एंड औरत के लिए ऐसे बन गया हुआ है कि औरत का काम ही यही है कि उसको खाना बना के दे, राइट? लेकिन ये नहीं देखती कि औरत घर पे क्या कितना कर रही है, राइट? Never had kids. I love cooking generally. No. I'm quite places. Would you cook for your husband and kids? If they told me to cook, I'd be like, no, खुद बनाओ. Yeah. अच्छा ये वही होता है ना कि काम करने को उठो और जब कोई कहे अब मैं नहीं करूँगी, खुशी से करें. And I think जो भी करना है खुशी से करें. के लिए और मतलब अपने शौहर के लिए तो आपको ऐसे ही इतनी मोहब्बत होती है कि आप ये सब कर दो. लेकिन मेरी अम्मी ने अगर किया या मेरी बहनें अपने शौहर के लिए करती है तो वो कोई जबरदस्ती नहीं करती. मैं जबरदस्ती की तो बात ही नहीं. It's a generally thing. पूरी दुनिया की मैं बता रही हूँ. जिसने करना है, जिसने, क्योंकि खाना बनाना आई फील लाइक एक मोहब्बत जताने की एक निशान. बिल्कुल. अच्छा, इसमें अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक वो उस पर मैं पूछना चाहूँगा. पहले ये था कि जी आदमी के लिए एक लॉ आया था, इस्लाम में तो नहीं है मेरे ख्याल से, शरिया में, कि जी दूसरी शादी करने से पहले उसको बीवी से परमिशन लेनी थी. और अभी उसको चेंज हुआ है कोई किसके तहत कि वो परमिशन उन्होंने कैंसिल कर दी है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? I think generally, so for example, जब आप निकाह भी करते हैं तो निकाह नामा it's sort of a contract, right? Yeah. तो contract that will govern जैसे आपकी rest of marriage आपकी चलेगी, right? अगर आप इस निकाह आई technically marriage में अगर आप enter हो रहे हैं with this understanding that you will be the only person for them, then technically you should be at least extended that privilege and courtesy of asking and making aware, you know. अच्छा एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगी. अच्छा देखिए, मुझे इस्लाम का भी पता है थोड़ा बहुत, बिकॉज मेरी फैमिली का बैकग्राउंड इस तरीके से है, तो हमारे घर में तो इस किस्म की बातें होती ही रहती हैं. तो परमिशन तो आई गेस नहीं है, ठीक है, लेकिन अवेयरनेस एटलीस्ट बता दो. आई थिंक क्योंकि मुझे लगता है अगर आपकी पहली बीवी है और वो आपको वो सब चीज़ें दे रही है, मैं ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ूंगी, ये बड़ा सेंसिटिव ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए. परमिशन का इफ आई मे ये परमिशन का आई ऑल्सो फील लाइक द वे दैट यू कैन रेकनसाइल इज कि इस्लाम में ये तो कहा हुआ है कि अगर यू डू टेक अनदर वाइफ और यू हैव मल्टीपल वाइफ्स, हर एक को इक्वल, बिल्कुल राइट, इक्वल ट्रीटमेंट, दैट इज द लॉ, राइट? अगर आपकी पहली बीवी का आपने इजाजत नहीं ली तो इज दैट यू बीइंग फेयर विद हर? आर यू ट्रीटिंग हर इक्वली? तो आप इसके साथ भी यही करने वाले. इफ शी फील्स कि दैट्स नॉट फेयर, अगर उसको नहीं अच्छा लगता, राइट, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने उसको इक्वली ट्रीट किया है? Wow. Right? Wow. That's so deep. That's true. So I get your point, and I would like to ask you another question. And what do you think about recent time दुनिया भर में ये LGBT और राइस और पाकिस्तान में भी हो रहा है. So what do you have to say on that? Is it good? Is it okay?
और हाउ डू वी रिफ्रेन फ्रॉम इट। और उसकी छोटी सी मैं एक वो दूंगा जो मेरे ख्याल से मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त वैलिड एंड उस पर मैं एक फिल्म पे भी काम कर रहा हूँ उसके स्क्रिप्ट पे, वो ये है कि हमारे यहाँ जो दुनिया भर में नहीं होता कि जब आप बड़ा छोटा होता है या लड़की छोटी होती है तो उसको अलाउड होता है कि वो मेल मेल फ्रेंड उसके आ सकते हैं, या लड़की है तो उसकी फीमेल फ्रेंड्स आ सकती हैं, घर में ओवरनाइट स्टे भी हो सकता है, हैंग आउट कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, सब कुछ। ऑपोजिट सेक्स के लिए हमारे यहाँ बड़ा मसला होता है। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ शुरू से ही इस चीज़ को वो दी जाती है आवाज़। जब लड़का लड़के एक साथ या लड़की लड़की रहेंगे कमरों में, टाइम स्पेंड करेंगे, तो दे माइट एक्सपेरिमेंट अदर थिंग्स विच आर फॉल्स, नहीं होना चाहिए। तो और ना ही इसका प्रमोशन होना चाहिए, ना ही इसकी वो होना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हमारे यहाँ बढ़ नहीं रही ये चीज़? I think world over और historically भी अगर आप पढ़ें तो it's very common. Greeks, yes, I know. It's very common. Everywhere it was there. जैसे human nature है, आप कह सकते हैं, it's human nature, you know, it's not, people make it say that it's a choice or it's not, it's human nature. I personally feel कि अगर इंसान अपना ह्यूमन नेचर एक्सप्रेस कर रहा है और आपको कोई असर नहीं पड़ रहा है, अगर आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, so then let people live, you know. नहीं तो do you think हमारे माशरे में बढ़ रहा है? I think और बढ़ रहा नहीं है, दिख रहा ज़्यादा है. दिख रहा ज़्यादा है, okay. Under the table. Okay, दिख रहा so ज़्यादा है. do you think इसको नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? I think Or you I believe that everyone should live as they are, happy as they are. okay. All right. Noya, you have a question? I have lots of questions. मेरे जो सवाल है वो ये है कि आप साउथ कोरिया से ट्रैवल कर आ रही हैं, like how recent? Wait, before इसी सवाल में मैं ऐड कर दूं, are you from there? No, No. What other languages do you speak? I don't speak multi. No. Okay. International languages. I don't speak international language. Don't you speak Korean? No, I don't speak Korean. I have this thing, if I travel somewhere, I try to learn some. Okay. Did you learn something? Yeah. Can you tell us something? So when I was in Korea, so if I was in a taxi and the taxi driver was trying to speak to me in Korean, I'll be like, 죄송합니다. Well, say that again. I said, 죄송합니다. 저는 외국인입니다. 한국 못해요. I like that. Oh no. Yeah. But how do you listen? 외국인입니다. 외국인 as a foreigner. 외국인입니다. I'm sort of like I don't know exactly. Did you blend in there like perfectly, right? I learned it. No. Yeah. Do you blend in, being I mean, there? they वहाँ तो नहीं मतलब कहते हुए पाकिस्तानी कोई आया हुआ? no. Pakistani was the last guest they had. Yeah. So what guesses did they have? They first of all, they thought I was half Korean. Half? They thought I was half Korean. They thought I was Wow. half Korean. I really मुझे भी यही लगा क्योंकि उन्होंने बताया ना कि वो कोरिया साउथ कोरिया से आई हुई है, मतलब इन्होंने मेंशन नहीं किया था for how many days और how recent. Oh no, I just मैंने देखा मतलब जान के मैंने तभी आपसे वो सवाल पूछा क्या बेसिकली कहाँ से, मुझे ये जो सवाल है ना बेसिकली कहाँ से, ये मुझसे इतना पूछा जाता है कि कराची मैं तो रहती हूँ, बेसिकली कहाँ से? Noya, you don't have that feature. She's a perfect nose of Korean. But the Koreans now, obviously. नहीं खास तौर पे eyes and nose. No, yeah. And अच्छा, for the skin tone. skin tone होता ही है. स्किन टोन टू आपकी पहले ना स्किन टोन देख के बोलता है वो, आपके फीचर्स नहीं देखें क्योंकि अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं है कि आधे से ज्यादा लोग दिखते ही ऐसे हैं दुनिया में। Yeah. और हमें तो इसलिए पता है क्योंकि आई एम रियली इनटू फूड, Okay, same. आई एम अ वेरी बिग फूडी। तो खानों की ही वजह से आई स्टार्टेड वाचिंग दिस के ड्रामास एंड उसके अंदर फिर मुझे इतनी यार क्या स्टोरीज लगती है वो, वाओ, मतलब what twist and everything. Yeah. और अच्छा लोगों को ये होता है ना कि if you're recommending them तो वो कहते हैं सारे एक जैसे ही दिखते हैं। मैंने कहा bro उसके अंदर जो वो चीजें हैं ना, you should watch it. Yeah. I used to watch like when I was a lot younger. Actually, the reason that I went to Korea with my friends, so I traveled the food. It was amazing. No, you're telling me about the skin care over there. The skincare there is. I've heard कि बहुत सस्ता है. Cream. It's सस्ता but it's very accessible. So जैसे for example अगर American markets में कोई new innovation कोई चीज़ आएगी, जैसे sunscreens अभी बहुत चल रहा है, right? जो technology sunscreens के US market में आई थी वो कोरिया में 4-5 साल पहले थी. And about the treatments as well?
So cheap. So cheap. Yeah. Very cheap. Okay. Did you get anything done? अच्छा फॉर दैट अब मैं आपको बताऊं कि हमें लगता है ना कि यार जैसे हम पहले लोग ना दे देते हैं कि नहीं वो कोरियंस है, वो जापानीज है, वो चाइनीज है, वो ब्रिटिश है, तभी वो ऐसा है। ऐसा नहीं है। ये मैं देसी लोगों के लिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं तो खुद इस माहौल में आसपास देखा है मैंने। व्हेन एवर आई रिकमेंड समवन ना कि सनस्क्रीन SPF लगाओ तो दे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फिर तुम लोग देख रहे हो वही चीज़ें और एडमायर कर रहे हो और फिर कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो रहे हो कि यार मेरे रिंकल्स क्यों हो रहे हैं, मेरी स्किन टोन ऐसी क्यों है, मुझे स्पॉट्स क्यों हो रहे हैं, मुझे ये क्यों हो रहा है। बिकॉज आपको पता ही नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उनकी दादियाँ नानियाँ वो एक तरीके से ना वो देते रहते हैं। बिकॉज आई लव टू वॉच दैट वो ब्यूटी ना Oh right? तो उसमें वो पहली चीज़ क्या कहते हैं लाइक ये मेरा SPF है, ये मेरी अम्मी ने दिया था, ये मेरी दादी ने अम्मी को दिया था, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स Yeah. बिकॉज दे केयर अबाउट So where else did you go in Korea? और क्या क्या किया In Korea, खाने के अलावा? my friend, we went to Seoul. That's the main city. Then we went to Busan. It's a port city. So no. We can't go. Have you heard that movie? Like yeah. We were on the train. We actually took a train to Busan. Really? Yeah. We So had, you felt that? yeah. We were taking pictures. I go train to Busan. It was really emotional movie by the way. Oh, I haven't seen. So You haven't? You should. I sure. Korean ड्रामे और Korean गाने और musicians वो बहुत ज़्यादा कोई आजकल सुना है कोई there is a thing for Gen Z. Yeah, K-pop. Yeah, K-pop. yeah, Right? yeah. K-pop. So personally, my sister is very into K-pop. Okay. She is K-pop. So उसी वजह से मुझे भी काफी exposure हो गया. And growing up, actually, like I used to be exposed to this as well. So I was always really aware of it. I'm more of a casual listener. I like listening to everything. So, but I am exposed to these fandoms and Okay. whatnot. So what's up with this skin? And then राज क्या है skin के पीछे? मतलब हम सब पाकिस्तान में रहते हैं हमें पता है हम सब की आपसे 2-3 लोग तो डेली पूछते होंगे। Yeah. हाँ तो ठीक है I mean is that natural or is it has something some treatment factors? What the care? I would say it's holistic. So I Okay. actually take supplements as well. What kind? I take multi. Could you tell our viewers कि जी भाई बस सभी कहते हैं अरे नहीं यार ये तो जेनेटिक्स है। नहीं इनसे सुनिए आप हाँ So I take multivitamins. So I take cod liver oil supplements. I make sure I'm on top of my zinc. I make sure zinc. Yeah, I make sure I'm on top. how many milligrams of zinc? It's just वो nature's bounty के आते हैं. अच्छा. So cod liver oil. इसके अंदर होता है? Zinc का भी होता है. I love yeah. So they have that and my multivitamins also has some amount. So multivitamins में सब कुछ होता है कुछ होता है. That's where I do my internal. I drink a lot of water. I don't know if I have with you yeah. I have a 2-liter bottle जो मैं 2 दफा तो खत्म करती हूँ. Okay. So I पानी हो गया have that market और yeah every day I just drink a lot of Yeah. water पानी हो गया multivitamins हो गए and I take really good care of my skin. what do you do for that? I've just seen the makeup box. What do you do? So for my skincare, my morning routine is separate from my nighttime routine. So my morning routine, I just do a very light cream cleanser because the thing is कि morning में I don't want to strip my oil. So I generally have oily skin. But oily skin में ये belief होती है कि अच्छा oily skin है तो moisturizer की ज़रूरत नहीं है. Yeah, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है because the thing is what you're doing is you're regulating that oil production. कि अगर आपकी skin dehydrated है तो your skin tries to overcompensate with its oil production. So you make sure pores भी हमारे ही सबसे ज़्यादा exactly. So I do more chemical exfoliation. I believe in chemical exfoliation as opposed to physical. It's very difficult for me to tell you my routine because I Actually more than myself I am asking this from our viewers. yeah, of course. Actually, the thing is, I have been into skincare since I was 17. So technically, like 8 years. Say I've How been many into steps are there in the morning and the night? I can't count. I can't because the thing is, Kate. चलो let me आसान कर देता हूँ सवाल Yeah. आप सुबह में और रात में कितना टाइम देती होगी अपने उसमें अंदाजन Because मेरा अब रूटीन बन गया है तो 5 minutes लग जाता है सुबह को. Okay. रात को it can take between 15 to 20 minutes. It's like 4 to 3 And times in the morning. एक सेकंड ये भी बड़ा सवाल है
when you are taking a shower or a bath, उस वक्त आप अपना मुंह पे कितना time लगाती हैं? No, so that's the thing. So you should not wash your face in the Wash your- shower no. because of the shampoo. Okay. So you have to make sure that after you shampoo, after This is an education for yeah, after you get done with मैं the हम shower. पे भाई सबसे Also have a proper way to wash your hair. Yeah, you Yeah. know that? Yeah. I'm sure. Yeah, scalp brush. Or scalp brush as well. Like, Yeah, exactly. खैर वो उसके लिए हम लोग दूसरा पॉडकास्ट तो निकालेंगे आप- फिर और आपका Did I mean is there was the shine in your skin? Is there a glass skin? What they call it? yeah, but Glass like skin. it's like just like I can do this and it'll stay the same. Can I do this too on my skin? यार आप भी शाइन कर रहे हो you are shining too. Yeah. No. Oh, but is she, even without the lights, I saw that when she came in, Huh. she had that glow on her face. So that's something natural, or the something that you got it done at Korea. No, it's glass skin. It's a phenomenon because the thing is that I exfoliate, I hydrate, I moisturize, I'm on top of my skin routine. SPF. So sometimes there'll be days कि मैं अपने आप को rest भी देती हूँ जैसे अगर Sunday हो गया, so I try to do very minimal skin. Yeah. Give my skin a Mask वगैरह भी लगाती हूँ. yeah. मास्क तो बेस्ट है आपके लिए हाइड्रेशन के लिए So good. Yeah. But with that, what's about your like routine with your friends? आप कब मिलते हो उनसे? क्या टाइम दे पाते हो? No. नाराज रहते होंगे? नहीं. अपनी फ्रेंड में तो एक लोग आंटी तो नहीं कहते. नहीं. Okay. नहीं. I'm या ओल्ड सोल तो नहीं कहते. No, not at all. I feel like I'm the kind of person के कोई छोटा बच्चा भी हो I can get along with them. कोई बड़ा भी हो तो I can get along with them. Like I have. Do you joke around and stuff? Yeah. You're getting married. No, I'm about to start. Yeah, well, what are your plans for getting married? No, this is a serious question. Good question, man. No, just asking, Kate. Obviously, you're mashallah 25. So how do you see yourself from maybe 5 years old? When do you intend to get married? And then what do you feel about a family and raising kids? And how do you feel yourself? Have you ever thought about it? Personally, if it were up to me, I would have 10 cats and 5 dogs and myself. That's it. Wow. 10 cats and 5 dogs. Yeah, if it was up to me. Okay. Then who's up to? Don't you think that so far you'll end up so far in your life you're a lawyer, तो तुमने अपनी मर्जी से लॉ किया ना Yeah. और आगे भी शायद तुम MBA करने जा रही हो Yes. तो अपनी मर्जी से करने जा रही हो और जो अब तक तो ये है I'm still applying, so I have like January for my applications, and so I'm looking at the US and Canada right now. Okay, Canada would be the right place to go. Yeah. You know why? कनाडा में अगर आप जाओगी तो आपको वहाँ पर इमिग्रेशन बनने का बहुत चांस Yeah, exactly. The thing was, the reason I've even thought of the US is because MBA is like a very big in the US. Yeah. So it's very easy to get a job there. Actually, that's why Okay. I'm also looking at the US in the Okay. terms. Yeah. और क्या ख्याल है आपका क्या आप कहना चाहेंगी इस कॉम्बिनेशन के बारे में जेन नेक्स्ट जेंजी कैसा लगा उससे पहले ये नहीं सवाल करेंगे आप करेंगे आप जेंजी के बारे में बताया हुआ हाँ वही मैं जेंजी के बारे में आप बताएं So Gen Z, I feel I'm actually right at the cusp. So Gen Z के बिल्कुल end में I'm 98. Okay. But I do feel like I can relate to Gen Z very easily. I am Gen Z, right? Yeah. You look like a Gen Yeah, thank you. But if you ask my youngest sister, वो तो मुझे बुड्ढी बोलती है. yeah Right? so how many siblings do you have I have 2 younger sisters. So the youngest, yeah. So the youngest, she's 18, और मुझे बुड्ढी बोलती है. किस वजह से बस कि आप पापा बोलती है नहीं. because of your boundaries because of your She just likes to make fun of me. तो मुझे बुड्ढी बोलती है. And she'll say to me, she's like, तुम क्यों बोल रही हो? तुम्हारा एक पाँव कवर में है. And I was like, I'm just 7 years older than you guys. फॉर्म कवर में अच्छा stay with me मेरी बहन का और मेरा डिफरेंट ये बताएं मुझे कि ये जो आपकी जेन जी है तो हाउ डू यू फील टू बी अ जेन जी एंड जो नोया का सवाल था कि हाउ डू यू रिलेट योरसेल्फ द ब्रिजिंग द फैक्टर इफ यू वर टू गो बैक इनटू जेन एक्स फॉर एग्जांपल जब इंटरनेट नहीं था जब कोई मोबाइल फोन्स नहीं थे कम्युनिकेशन नहीं थी सोशल मीडिया नहीं था डू यू एवर इमेजिन कि जिंदगी कैसी होगी उस वक्त मुझे याद था एक्चुअली जिंदगी कैसे थी. आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली बिकॉज आई वाज जब इंस्टाग्राम
पहले निकला था मुझे याद है आई वाज इन आई वाज इन लाइक क्लास 7 8 और समथिंग और मुझे याद है कि मैं अपनी दोस्तों को फ़ोन करके बोलती थी याद इस ऐप इंस्टाग्राम इसको यूज़ करो तो इट यूज्ड टू बी आई यूज्ड टू हैव द मोस्ट फिजूल थिंग्स लाइक देयर वाज दिस वन पिक्चर बट आई वाज बाइटिंग माय नेल्स एंड आई रोट द कैप्शन ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड एंड दिस वाज लाइक बैक इन 2016 और समथिंग बहुत पुराना जब इंस्टाग्राम न्यू न्यू निकला था उस वक्त इट वाज अ कैमरा छोटा सा होता था एंड नीचे जब नोटिफिकेशन आते थे ऑरेंज में आते थे तो बहुत रीस में आई जॉइंड मतलब ये इंस्टाग्राम 2017. नो आई एम लाइक ओल्ड और नहीं मैंने एक्चुअली यूज करना बाद में क्योंकि आई वाज इनटू फेसबुक और अब तो आप यकीन करें मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाती ही नहीं हूँ मुझे मीम्स मटेरियल जो रील्स ओह माय गॉड ऑल नाइट लॉन्ग Killed Facebook? I think it just it now doesn't matter. That was, see, when Meta bought it, जब sorry, इसलिए जब खरीदा, Facebook turned into Meta, then Meta bought Instagram. yeah, तो आई थिंक वो बेचारा अपनी नौ पे आप मर गया वो फेसबुक, मुझे लगता है. I mean the thing is उससे पहले लेकिन आपको ज़्यादा आइडियाज मिलेगी. आई यूज्ड टू आई इंस्टा मेरा ज्यादा होता है. okay ये अलग बात है जो मेरी स्टोरी इंस्टा पे होती है वो फेसबुक पे खुद से चली जाती है, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन फेसबुक. I love reels. actually the funny thing is We all- growing up my family was not really for me being on Facebook. Okay. तो मैं Facebook पे कभी थी नहीं. Exactly. I was never on. But you grew up into when you grew up you were Insta was there. Exactly. So for me, my first introduction to social media was Instagram. But are you on Twitter? You use Twitter? I am that. I am on Okay. Twitter. Are you मतलब ज़्यादा तुम देखती हो? I am a Twitter. Because of you being lawyer, right? No. Otherwise also. Definitely. I love Twitter. Okay. I feel like जो memes आपको Instagram पे मिलते हैं वो Twitter पे पहले आते हैं. पहले आते हैं? Yeah. Okay. हम अभी भी इसको ट्विटर ही बुलाते हैं. निज़ाम change हो गया. It's called X now, but I call it Twitter. Yeah. But Twitter is so different यार. The bird, the logo was so different. हाँ ट्विटर जो था. नहीं ट्विटर ट्विटर नहीं है. वरना भी इसको ट्विटर चाहिए. But आमना मेरा सवाल जो था वो रह गया. मैं इंस्टा की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं तो तुम सोचो सोशल मीडिया ना हो, ईमेल ना हो, इंटरनेट ना हो, मोबाइल फोन ना हो, उस वक्त की बात कर रहा हूँ. How do you see अगर तुम होती उस वक्त? अभी पॉडकास्ट भी नहीं कर रहे होते फिर. Podcast सुनी कर रहे थे actually. So I grew up. Can I have your phone? Yeah. So let's check कि जी ये आपने फोन के बगैर इतनी देर रह सकती है हाथ में. Do you like it, the phone in your hand? Yes. Yeah, because I know you were fondling with it. I hold it. Yeah, constantly, yeah. It's like a baby in your hand. Baby is. आज जब गिरता है तो जान निकलती है. मेरी तो निकलती है. मेरा इतना गिरता है कि I'm used to it now. हाँ बोल रहा है मेरी स्क्रीन तो आप देखें ही ना. हाँ मेरा भी गिरता है और मुझे इतना दुख होता है क्योंकि I cannot बर्दाश्त of it because I've lost 2 phones with that and I can't. And मुझे heart attack हो जाएगा. But yeah, the way you were carrying your phone, how do you feel now? How would you fidget now? Yeah, that's. I have like a fidgeting habit. So जो मेरा pop socket था मैं इसको fidget काफी करती थी. Yeah. But actually, my thing with the phone is mainly because when you're a lawyer, like you're always kind of on the clock. Okay. So because my phone is on silent, so I hold. You don't wear a watch? I can no, I don't wear. You use your mobile phone? Yeah, I use my mobile phone. So I actually just hold it. ताकि कोई notification है तो buzz okay, I can just quickly check कि अच्छा notification is it mine. अच्छा आप imagine करो कि तुम 1980s में हो, ये 90s में अर्ली 90s में और तुम जो है लाइफ गुजार रही हो. अब तुमने घर भी जाना है, गाड़ी भी बुलानी है, तुम कैसे करोगे? अब इमेजिन, और मैं उस वजह से पूछ रहा हूँ और आपके लिए भी है, आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी इसी जनरेशन की है. वो ये है अब आपने घर भी जाना है और गाड़ी नहीं है इस वक्त, ठीक है, और घर पे आपने बोला था मुझे इतना टाइम हो जाएगा और आप लोगों के से सवाल है, फिर उसके बाद न सिर्फ ये बताना है बल्कि आप लेट हो जाओगी यहाँ पर, लेट्स सपोज, और आपने घर भी जाना है. नो इंटरनेट नथिंग, सिर्फ लैंडलाइन है आपके और घर वालों के पास. यदि यहाँ का लैंडलाइन भी नहीं, इमेजिन करो हमारे पास है भी नहीं लैंडलाइन. Okay. तो आप अगर ऐसी सिचुएशन में ऑफिस जा रही हो या दिन में और आपने गुजारना हो तो कैसे करोगी? या आप बाहर चली गई हो, इमेजिन करो बाहर जा रही हो और आपके कोई इंटरनेट नहीं हो, कुछ नहीं. I mean, I can recall क्योंकि मुझे phone भी actually बहुत late मिला था. मुझे phone. मुझे आप भी बताओ कि आप कोरिया गई हो. एक तो एग्जाम्पल, अभी क्या करूँगी घर के तो कब लिख लूँगी? घर नहीं
अच्छा फिर इसके लिए तो मैं बेसिक चीज़ ही रखूँ, घर में लैंडलाइन होना चाहिए फिर। लैंडलाइन हो गया। हाँ, घर में और लैंडलाइन में तो बहुत रिसेंट खत्म हुआ है लैंड। मुझे याद, आई यूज्ड टू यूज अ लैंडलाइन व्हेन आई वाज यंगर। मैं कॉल्स आती है, आई हैड माय House numbers memorized उस Okay. वक्त. I had to memorize. So I There were how many numbers that I remember when I was a kid. I mean, your age, I had maybe 120 or 30 numbers. मुझे by heart याद थे. आज मुझे अपने नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं याद. So that was the memory status हम लोग का होता था. But कोरिया गई हो. मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ. मैं पेरिस गया. I think it was 1997 और फ्रांस में था तो मुझे एक दो जगह जाना था. एंड देन और आपको पता ही है फ्रांस इज वन ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप जहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती, इतनी नहीं बोली जाती, नहीं वो अप्रिशिएट करते हैं अंग्रेजी बोलने वालों को, और हमें तो इंग्लिश ही आती थी. तो मुझे गया तो इससे पहले मैं दूसरे कंट्रीज भी गया था, हॉलैंड वगैरह, ये वहाँ नहीं प्रॉब्लम आई. तो यहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी फ्रांस में. सारी साइंस भी फ्रेंच में थी और मुझे ट्यूब लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना था. एंड आई रियली फेल्ट कि एज़ इफ मैं क्या तो अंधा हूँ या ब्लाइंड हूँ. एंड लिटरली आई फेल्ट लाइक एट सम पॉइंट आई वाज यंग 18-19 क्राइंग कि यार मैं किस तरीके से करूँ, बिकॉज न ट्रेन का समझ में आता था, न टिकट पे लिखा हुआ समझ में आता था, न कोई ऐसी ऐप होती थी जिससे हम कर सकते थे, और रास्तों का भी नहीं पता चलता था. तो इफ यू वर टू गो टू कोरिया इन दैट टाइम, हाउ वुड यू मैनेज? Oh, I would have studied. स्टडी द लाइब्रेरी जाके? या मैं मैप पढ़ती, हम्म. मैं बुक्स पढ़ती, लैंग्वेजेस पे, सब पे, कल्चर पे. Then this is मेरी दोस्ती कर दी आप. this is what I do even now. So before I go anywhere, I like to read up on it. So I feel जैसे मुझे पता है मैं कहाँ हूँ, because maybe it's because I'm a bit of a control freak, so I like to be in control of my surroundings. Okay. तो even जैसे मेरा cousin जब कोरिया में he works there, तो when he was telling me अच्छा ये ऐप डाउनलोड करो, मैंने कहा हाँ मैंने कर लिया हुआ है. He's like अच्छा ये कर लो, मैंने कहा मुझे पता है कैसे करना है. He's like अच्छा इसको तो मुझसे ज़्यादा पता है. And वो तो कोरिया में like 4 साल रहा है. Okay. This is my habit, like I just say like learning a bit of the languages to get by. So like if you can go to like a shopkeeper, you can say hello, you can ask how much No, but something is. अब तो जब जापान गया मैंने कुछ अर्से पहले, सो अब तो ये था कि मोबाइल में आप बोले इंग्लिश में, हाँ वो जापानी ना वो बोले. If you learn the language, you don't need it. Yeah. If you learn the language, you don't. Of course. And another thing is that human beings are so nice. I'll tell you this one instance of when I was in Korea. So I was trying to get a SIM card. मुझे SIM card नहीं समझ आ रहा था. So जो आगे वाला बंदा था उसके पास, क्योंकि मेरे पास नेट नहीं था और उसके पास वो उसको भी समझ नहीं आई थी. He didn't know any English. Human nature is so nice. He was such a nice person. He was हाथों से मुझे समझा रहा था. Wow. This works for day. मैंने कहा day, ही घड़ी दिखा के full day 24 hours मुझे सिखा रहा था कि 1 day 4, and then he was trying to figure out कि English में बेचारा like वो खड़ा होके ऐसे बोल रहा था, what is it like ऐसे बोल रहा था, like you can tell that desire to help someone. So even when we were at the train station, हमारे कार्ड का कोई मसला हो रहा था, we didn't understand. So instead of us actually going to someone and asking for help, they just used their card for us and let us go. And like this, वो समझ जाता है लोग, समझ जाता है. So even if for example आप किसी के पास जाए, उनको आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, but जो human nature है, like kindness of helping, like that's universal, right? So it's always very. But Amna, अगर आप क्या समझते हो, जैसे हमारे जनरेशन के लोग हैं, जेन एक्स के, और वो लोग, डोंट यू थिंक कि हमने and I'm talking about everybody in your family, your teachers, your bosses, जो भी लोग हैं, they've done a good job in terms of कि जी उस वक्त से आते हुए हमने the way we have adapted, using the phones, got in line with you guys. Don't you think it's commendable? It's amazing. It's amazing, I think. But if you think about it, like हर generation में कोई new modern. इसका जवाब है, मैं बताता हूँ. जब हमारे पेरेंट्स से इसमें मैंने बहुत सोचा, तुमने कहा हर जनरेशन में होता है. तो जो I'll tell you, स्टीम इंजन के बाद जब टेलीविजन आया उसमें 100 साल लगे थे शायद, ओके, 100 years. टेलीविजन के बाद जब आपका कलर टीवी आया उसको 50 साल लगे, 30 साल लगे, ठीक है.
और जब कलर टेलीविजन आ गया तो उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन्स या आपकी इंटरनेट है उसको 30 साल लगे। सो पहले जो था ना अमला 20, 30, 40 साल लगते थे, एक टेक्नोलॉजी 100 साल लगते थे। अब क्या हुआ है पिछले 20 साल में जो एडवांसमेंट है, इट इज़ सो रैपिड, सो फास्ट। आईफ़ोन आया है और कौन-सा 5th 6th जनरेशन चल रहा है, राइट? No, it's 15 now. 15th जनरेशन। ओह! जनरेशन इज़ द मॉडर्न नंबर? No, like iPhone 15 about, yeah. आ गया, नहीं मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ। Yeah, generation. जनरेशन जैसे टेक्नोलॉजी की जनरेशन है ना, आई थिंक इट्स 5th जनरेशन या इसी तरीके से इंटरनेट की कुछ I जनरेशन। believe X जब उन्होंने लॉन्च किया फोन सेलफोन की आई मेंट सेलफोन नॉट Okay. अच्छा सेल्फ स्मार्टफोन या उसकी जनरेशन 15 साल होगा। नहीं what I'm saying is into 5th or 4th, I don't know which generation what तो ये इतनी जनरेशन तेज बढ़ी है पिछले 10 साल में। ये जनरेशन है इंटरनेट की भी जनरेशन बहुत तेज बढ़ी है। सो अब रैपिड हो गया है बहुत। आप अभी देखो ना आप there was a time when a few years ago 5 or 10 years ago BlackBerry was the thing और उससे पहले Nokia was the thing हाँ, and then within 10 years Nokia को कोई नाम ही नहीं लेता। ठीक है, आईफोन इज द थिंग नाउ, वी डोंट नो अब। नोकिया तो मेरे ख्याल से बंद हो चुका है। हाँ, अब मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि अब आईफोन की कब मौत होगी बेचारी की और कोई नई चीज आ जाएगी। सो इट्स आपके पास मूवीज हैं देखने के लिए, लाइक जो वो दिखाते हैं, जो शो करते हैं कि लाइक ये ऐसा फ्यूचर होगा, प्रेडिक्शंस That's true. What my really scary by the way. it is very scary. My point is कि how do you see कि जी इस टेक्नोलॉजी के साथ जैसे तुम चल रही हो, for example when you have kids they will have it new technology। आप सुना है मैंने, जो बच्चा पैदा होता है वो आईपैड पे बड़ा खुश होता है, वो आईपैड को ऐसे चलाता भी है, करता भी मेरे बच्चों को तो ये मिलने नहीं वाला। है। So this is I mean incredible, नहीं? Yeah, it is. Would you allow your children to use iPad and all? I mean, right now I can say no, but उस वक्त I know कि how helpful an iPad is for kids, so I'm not gonna say anything. कितना पागल होते थे और कितना वो, मतलब मुझे याद है जब अब मेरे फादर ने पहला फ़ोन लिया था और सब चीज़ें, हमें कितनी एक्साइटमेंट थी और फिर वो चीज़ें यूज़ करना, फिर मतलब वो सब था। लेकिन अब जब हमने सब कुछ सीख लिया है ना, तो हमें पता लग रहा है कि हमें क्यों बड़े समझाते थे। अमना बट एक और चीज़ है मैं आपसे पूछना चाहूँगा, you being 25-year-old in this age and time, it's the generation Z, have you been in a relationship? No. Okay. Is that because of your personal preference or religious or cultural? I mean, my parents, well, I come from a very conservative house That's to great. begin with, Yeah. so it's always been sort of a big no-no. So it's never really been considered, and I feel like now I'm just at this point where it's just like, it's better give up now. लड़के तंग तो करते हो? I don't know, because I've been told कि मैं बहुत ड्रॉनी लगती हूँ. So like, जैसे for example, गुस्से वाली लगती है। गुस्से वाली है, I seem unapproachable. So like I'm sitting like this the whole time. Do you give the boys a bad look or something? Do you like put them off or something with your looks or your eyes? I don't know, because It's natural, no one speaks to me. Okay. कोई मुझसे Those बात नहीं kids. करता. You like music? I love music. What was your favorite? I have a university. I can't pick one. कोई नहीं है? Movies? Movies देखती हो? देखती हूँ, but not that much recently. Books पढ़ती हो? Yes. कोई favorite book है? Well, currently I'm reading about जो अभी Oppenheimer movie आई है, Yeah. तो just book it was based on, so I just started it very recently. So I'm trying to read it. So what do you think about the bomb itself? Do you remember the chemical formula for it? No, I haven't seen the movie yet. Okay. I haven't- book में भी जिक्र होगा। Yeah, I just started with the अच्छा, उससे ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा केमिकल था वो एटॉमिक बॉम्ब के लिए। uranium. नहीं, it's not from P. प्लूटोनियम होगा। I don't know, मैं भूल गई, मैं यही बता दूँ। देखो यूरेनियम और प्लूटोनियम सारी एक फैमिली की, बस कि वो डेरिवेटिव्स अलग अलग है। सो आई एम नॉट श्योर इन्होंने कौन सा बनाया, बट हमें तो बनाना सिखाया गया था अपनी इंजीनियरिंग में। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी एंड मूवी जरूर देखना, मैंने भी नहीं देखी, हमने देखनी है। या वी विल वॉच इट। बट
इस मूवी के लिए they invented a special camera Yeah. which is IMAX one. Pro something, not even normal IMAX, and this is like 80 beyond. So you must see it, and इसके अंदर जो it's a technological masterpiece, and it's a cinematic masterpiece. And Nolan तो वैसे ही Nolan बादशाह आदमी है. Yeah. So इसकी तो movies कमाल ही होती है. तो any song, do you like Indian or Pakistani music? I like older Pakistani music. Okay, name a song. Ali Azmat is the love of my life. यार ये दोस्ती है और नींद आती नहीं. Nare Naam. Nare Naam. Yeah, Garaj Baraz. I love मिट्टी में मिल जाएंगे. Have you heard that song called मिट्टी में मिल जाएंगे? No. गरज बरस वाली ही एल्बम है. अच्छा, इस पे मैं ये बात अपने चैनल की बात करना चाहूँगी कि वो बातें तेरी के जब आप चैनल पर जाएंगे और आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे एक्सपेरिमेंट्स, सॉन्ग्स, चीज़ें जो कि नवीद फारूकी साहब ने बनाई हैं. तो अगर आप हमारे पॉडकास्ट के पीछे की साइड भी देखेंगे तो ऐसा लग रहा है इस तरह कोई कोलैब हो चल रहा है. ठीक है, कि वो बातें तेरी पॉडकास्ट एंड जेन एक्स टू जेन सी दो वो बातें तेरी के जब आप चैनल पे जाएं और आप देखें तो बहुत खूबसूरती से नवीद साहब ने विंटेज को जिंदा रखा हुआ है अपना चैनल. वहाँ पे ऑडियंस आते हैं, देखते हैं. मैंने जब इनका चैनल खोला तो मुझे समझ आया कि अच्छा ठीक है, ओके, नाउ आई गेट इट. Yeah. You should scroll our channel. जरूर देखना. मुझे तो बताओ कि आप तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा, happiest moment of your life so far, if you want to recall it, any moment. Mashallah, like I've had So many? so many. And you have to name one. Name one. Hardest question for me too. There's this one moment where my cousin was getting married, and hum sab immediate family, we were all together, and my cousin, my papa was playing old, like USB पे उन्होंने laptop पे लगाए हुए थे पुराने सबकी pictures and videos, and our whole immediate family was sitting together laughing, looking at the pictures. And there was this moment where we were quiet and we were remembering my grandfather, my dada, and we were thinking about how happy he would be right now that seeing his whole family is together and laughing. And that is something that really like kind of warms my heart, to think of that time where we were at a time and where we collectively just became quiet and we just had the exact same thought कि right now our dada would be so happy. That's so sweet. अच्छा, मैं भी यही कहने वाली थी. उन पिक्चर्स में तो काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि आज साथ नहीं है, पिक्चर्स में जिंदा है. आई फील टेक्नोलॉजी ने हमारी काफ़ी सारी हेल्प भी की है. Actually, exactly. There's so many people हर तरीके से. have like the actual like pictures. और pictures damage हुई हुई होती हैं और वो सही करके दिया सही करके दे सकता है through AI and everything. Okay. Do you have a message for Generation Z and Generation X? Generation Z, keep it up. Keep it up. Or what about Gen X? Keep up with Gen Z. That's so good. Wow. So, we are trying. And hey, is your phone back? Do you have a chat GPT in your phone? No. Can you go online and do this? Yeah, sure. I have. मेरे phone camera. नहीं, you have? Okay. Okay. So what we're going to do is this part of the podcast. Okay. So you're going to write a question and you will have to answer it. Yeah. Okay, first. What major events or cultural shifts have defined your generation's upbringing and worldview? Okay, can you answer that? This is a question that we've asked ChatGPT to ask our guest, Amna, and she'll answer it. Cultural events and major events. I think that's a good question. I generally think that Me Too has been very pivotal Okay. in our time. Me Too movement has been quite important, just to have like situational awareness. For your Profession, my generation in general. Okay. So people say that, people try to link Me Too with cancel culture, and cancel culture ka kafi abhi uspe bhi hot debate chal raha hota Cancel culture. Cancel culture is basically that so one thing is that Gen Z is very opinionated, and they're very I would say they're more liberal in their opinions. They're more left leaning. So for example, if someone they believe has
perhaps done something wrong, or perhaps if they were racist, if they harassed someone or something along those lines, then they cancel them, sort of. You stop giving them support, you stop giving them a platform, just completely isolate and just completely section them off. Exactly. See, now we can say that that's what they deserve because that's what we believe. You might say कि rehabilitated हो सकते हैं, chance दे सकते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर ये कोई करेंगे तो फिर बस खत्म, बंदा इंसान बन सकता है. जेन जी, मुझे लगता है कि मैं उसी टाइम ड्यूरेशन में इतना उनको चांस दे देती हूँ. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठप करके कैंसिल कर दिया, चांस दिया, लेकिन उन्होंने उसका फिर से गलत इस्तेमाल किया. तो आई गेस इट्स लाइक I also feel like in ज़माना ही ऐसा है कि there's no excuse to remain uninformed. आपको इतना जमाना इधर है. सुनिए, इतनी जबरदस्त इन्होंने बात की है. जमाना खराब है, जमाना ऐसा है. और आमना जो इतनी प्यारी बात की, क्योंकि ये वो बात है जो कि हमें अपने बुजुर्गों से सुनने को मिलती है कि जमाना ऐसा चल रहा है, जमाना वैसा चल रहा है. आज हमसे सुन रहे हैं आप. आज आप लोगों से सुन रहे हैं, आमना से सुन रहे हैं, जेन जी से सुन रहे हैं. क्या हसीन इत्तेफाक है. आमना, उर्दू की क्या सिचुएशन है? आपकी उर्दू बोलती हैं आप? बोलती हो, सुनती भी हैं? सुनने की कोशिश करती हैं. ओके. और लिख सकती हैं? Yes, पढ़ सकती हैं? पढ़ सकती हूँ. ओके. I think I can read better than most of. Can you write something for me? Of course, my Urdu handwriting is very good, I think. Write me the word. There's this place called Kustuntuniya. What? Can you repeat? Kustuntuniya. Okay. Constantinople. Is it a place? जी जी, सिटी है, कंट्री आई थिंक. क्या कॉन्स्टेंटिनोपल की? Constantinople. नोपल. Yeah. सॉरी. Constantinia. इस्तांबुल. नहीं, अच्छा. अच्छा हाँ, मैं Constantinople. सुना है नाम का ही. देखते ना, मजेदार. मुझे पता नहीं, याद नहीं है तो जो ड्रामास में मैंने सुना है ये नाम. कुस्तुनतुनिया में गए फतह करने. Constantinople. ओके. उन्हें कैसे लिखा है? इतना प्यारा क्यों लिखा है? शी रोट काफ थे कुछ तुम नून. ये वैसे तो अगर पढ़ा जाए तो बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन मैं आपको शब्द से लिख कर दिखाता हूँ. पर वो ये इस तरह से निकला. आपने इनकी कप में नजर डाली है आमना? जरा जस्तुजो दिखाए अपनी. I was close. तो ऐसे काफ आती है, दोस्ते वाली पे तोएं आती हैं, कुछ तो नून, फिर ते. अगर आपने कुस्तुनतुनिया बोला तो मैं ऐसे लिख देती. मैं तो इसकी तो नहीं बोला, but that was just a joke, and it's a difficult word, Yeah. and I'm sure you know it. So तो कोई मसला नहीं है. मेरे ख्याल से कि उर्दू से मोहब्बत की दाम तो मैं भी देती हूँ. आप इनका कब देखे, जरा कब दिखाएगा? नहीं, जस्ट जो. और मतलब इस घर में आप घूमेंगी, आप देखेंगी. आई थिंक ये पढ़ लेना चाहिए था. तो ये उर्दू मेरे ख्याल से is dying, but उर्दू is our mother language. It's such a beautiful language. और उसको बोला जाए या सुना जाए तो अच्छा रहता है. लेकिन ऑफ कोर्स हमारी जो एजुकेशन है, हमारी आपकी सारी लॉ की किताबें सब इंग्लिश में होंगी, और मेडिकल की किताबें, इंजीनियरिंग की किताबें, which is all right, but उर्दू आनी चाहिए. No harm in knowing उर्दू. And man, you have anything? अच्छा जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वो बातें तेरी के इस प्लेटफॉर्म पे जो नेक्स्ट एजेंसी पे आज आप बैठी हैं, पॉडकास्ट आपने हमसे अपनी बहुत सारी खास बातें शेयर की हैं, हमारे सवालात आपने जवाबात दिए हैं. कैसा लगा आपको? I really enjoyed it. Yeah. What part did you enjoy the most? एंड आपको ऐसा लगा कि मैंने खुल के अपना सारे जो नुक्ता नज़रिया हैं वो बयां कर सकी मैं? I mean, generally, I'm a bit more careful with voicing my opinion. But 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 you आपको feel लगा? comfortable. yeah, because I really enjoy talking about social issues and social general like social awareness, cultural issues. So I really enjoy talking. I try. For that आप चाहती हैं कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक बात कि बदली जाए?
नहीं, she's asking about the podcast and हमारे channel के बारे में. How do you feel? Do you think it's good? Do you want to give a feedback, input, get it, make it much better? कुछ ऐसा सर? No, I think it's perfect as it is, because the thing is it remains yours Yeah. if you keep it as you want. Yeah, exactly. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. इसमें हमें किसी को जवाब नहीं देना, कुछ नहीं करना, भी relax, cool, Those comfortable. who like it, like it. जिसको पसंद है, देखना है देखे, एंजॉय करना है नहीं करना. बट मैंने जैसे पहले कहा था अपनी पहले पॉडकास्ट में, द होल पर्पस इज टू ब्रिंग दोज पीपल हु आर रियल हीरोज. मैं समझता हूँ सक्सेसफुल पीपल आर नॉट दोज पीपल हु हैव मेड मनी और मेड फॉर्चून और फेम. मेरे नज़दीक वो है सक्सेसफुल पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड और हु हैव इंटेंशंस टू कंट्रीब्यूट towards life, society, places and people. Exactly. और ये जो सारा कुछ है, चाहे एक बंदा भी देखता है, सुनता है, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और ये एक चीज़ आर्काइव हो जाएगी, लाइब्रेरी में चली जाएगी, जो कि सदियों तक रहेगी मेरे ख्याल से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे. और जिसको जब चाहे, इवन जब आप भी कभी बड़ी हो जाओगी तो जब जाकर देखोगी तो आप भी खुश होगी कि यार I had spoken this, I had said that, and this I used to feel this way, and you will feel great about it. You can tell your children about it too. Yeah. Don't you think so? So मेरा मकसद यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी को नहीं, मेरे नज़दीक she is a celebrity. मेरे नज़दीक anyone. अगर कोई सेलिब्रिटी आना चाहे, we don't mind. No, but I think the people like her are really celebrities. Obviously, priorities. Yeah. And for that, do you have any favorite quote or poem do you want to share with us, कुछ with your कोई गा- viewers? And inshallah, इस podcast के जरिए तो आपके बहुत सारे fans भी आने वाले हैं. She don't need friends. Yeah, I know, but आज आप उनके लिए शेयर करेंगे, चली जाए. आपका इंस्टा अकाउंट तो प्राइवेट ही होगा. Yeah, it's See, private. Very good. Yeah, it's private. Very good. मेरा भी प्राइवेट. For that, मैं पहले हमारी कोई बातचीत हो रही थी, इसमें वो फोन के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मैं भी वही कही थी कि हाँ यार, क्योंकि लेट इतना शुरू किया यूज़ करना सोशल मीडिया के, बड़ों की इजाज़त नहीं थी कुछ चीज़ों में इस तरीके से. खैर, तो आप बताएं कि कोई कोट शेयर करना चाहेंगी आप, कोई बात Yeah, कोई कोट, कोई शेर, कोई anything that you want to share. जो आप आज कहेंगी ना, वो तो कोट बन गया है. चार. Not particularly. Did you want to say something for me? For you, Yeah. no. You seem very self-sure. You seem very sure of yourself. Thank you so much. That's very मेरा टाइम लगा इस चीज़ में, खुद को ढूंढने निकली थी. I think the journey to find yourself should never end. So you like वो बातें तेरी का concept or no? Yes. Okay. And would you recommend your friends? Yeah, 100%. Yeah. अब तो करना पड़ेगा हमने. सुनना पड़ेगा. नहीं, otherwise मैं पूछ रहा हूँ. No, generally I would because my friends, we really like listening to podcasts anyways. Okay. So we actually listen to quite a few ourselves. So it's So do you recommend, again, I want this to be part of this podcast, any other platforms that we should add this podcast or other than YouTube? yes. Where? So there's Okay. Apple Podcast. Okay. I think there's this one website where if you upload your podcasts, you can actually get it streamed What to is it? It's different. Spotify, Google. So I have Google Podcasts, I have Apple Podcasts. Spotify in Pakistan doesn't give podcasts anymore. पहले मैं सुनती थी. So I listen to. Samir, we have to make a note of that. Yeah, there's a website that there's one do cumulative. I think it's subscription based or something. अगर आप उस पे अपने podcast upload करेंगे, then it actually gets added to like Spotify, Apple Podcasts. It adds gets मतलब वो FM का दौर आ रहा है. yeah, but I think podcasts are really good. आपको बहुत सारी चीजें Basically YouTube, and this is what made me go start. I had thought about it years ago, but YouTube recently did that. अगर आप YouTube के उस पे जाएं, किसी भी चैनल पे जाएं, तो उस पे उनका आता है, जैसे पहले आता था ना, प्लेलिस्ट, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, पॉडकास्ट का एक उन्होंने आइकन ऐड किया. Yeah, because people are also doing now. There's Video video podcast. Video podcast. Remember 2 years back when I just Yeah. randomly suggested. Yeah, I have written it down. यहाँ भी लिख लूँगा. Yeah. 2 years back. मतलब वो randomly suggest किया था and just like today. मेरा तो 4 साल से था ये प्लान. नहीं, आपको तो चैनल था ना. तो obviously अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती कि आप मेडिटेशन, योगा, इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट है आपका? I used to be quite into like yoga and meditation, but मैंने इससे पहले बोला था. yeah, but I
क्या चीज? I'm more in gym now, so I Yeah, she's working out. I work hard. Okay, that's Yeah. really nice. That's good. That's great. No, so for you, आप जिंदगी का मतलब क्या आपके लिए? Life. What is life to you? Fulfillment. बुलबुला नहीं है? It's a bubble. No, So no. I it's feel very fragile. no Okay. Or is it fulfillment? fulfillment. Okay. For me, life is So fulfillment. do you believe in the fact that जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा? शुक्र है नहीं मिलेगी दोबारा. No, I mean, not in a bad way. I mean, this phrase means के जी लो अपनी जिंदगी. Live your life. Do whatever makes you feel fulfilled. Okay. Yeah. That's amazing. That's amazing. And on that note, we would like to say thank you to our beautiful and distinguished guest, Amna. And उसके साथ मैं इनको एक छोटा सा नजराना गिफ्ट देना चाहूँगा वो बातें तेरी की तरफ से. नोया, तुमने कुछ कहना है? मुझे यही कहना है कि वाओ, अगर हम मुझसे पूछते हैं ना कि तुम बताओ अपनी जिंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट, तो मैं कहती बस. Okay. जबरदस्त. Wonderful. Nice. That's a compliment. Nice to know you because मैं हमेशा तो लॉयर बनना चाहती थी. नोया, इनको आप हमारी तरफ से वो बातें थे जिनकी तरफ से एक छोटा सा हमने आपको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देना चाहेंगे और वो आप प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और होपफुली आपको यहाँ आना पसंद आया होगा. एंड देन वी विल सी यू इंशाल्लाह वेरी सून. वी विल इनवाइट यू अगेन once we are grown into the channel, into the podcast, and please keep coming back to Batein Teri. Thank you very much for Thank you very Thank much. you so much. Thank you. Thank you so much for having me. Nice person. Thank you. इंशाल्लाह आप चलती रहें, मुस्कुराती रहें, आगे बढ़ती रहें. Thank you. Thank Thank you. Thank you for having me. Thank you.